Hello everyone. Now in the accountancy, now today let's start with the journal, fourth chapter. Journal is the most important and very important chapter of the accountancy. I'm not telling that of 11th standard accountancy but whole accountancy, right? आप जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे तब तक आपको जर्नल तो आना ही चाहिए. Without journal, account is not possible to record, right? So this is the most important and very important chapter. Now what journal means? Now journal means nothing but day to day transaction. Each and every transaction we record in one separate book, that is called as journal. Journal is nothing but a separate book recording day to day transaction, that is called as journal book. Now see, a journal book is a fundamental book of double entry system in which a basic fundamental book on the basis of which the remaining books of the accounts are prepared. जर्नल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा बुक है, उसके बेस पे अदर अकाउंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, राइट? अदर अकाउंट्स आर टोटली डिपेंड अपॉन जर्नल. नाउ French word jour, J-O-U-R, jour means day, from which the word journal is derived, meaning of which is daily recording of business transaction. English word journal is originally of Latin language. The meaning of it is note or a diary, right? Journal is nothing but a day-to-day transactions diary. So a journal is known as the book of original entries. Book of original entries. Journal can become an evidence for the accountancy. It is such a book of accounts where all accounting transactions are recorded in order of the date. उसमें डेट वाइज ट्रांजेक्शन लिखे जाएंगे. फॉर एग्जांपल 1 सितंबर के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ, 2 सितंबर के फिर सारे ट्रांजेक्शन एक साथ. दिस इज़ हाउ वी कैन मेंटेन जर्नल बुक, राइट? नाउ from rough book on the basis of voucher accounting transactions are recorded in the journal book. तो journal book में हम record करें कैसे? तो from the rough book, मतलब पहले हमने roughly record किया होगा from the voucher, and then after we write down in a proper format in a book on daily basis, that is called as journal book. Vouchers are maintained in the file in order of date. After having entry in the journal book, then different accounts are opened and posting is made. ये posting वाला word आपका एक अलग से ही. On the basis of it, balances of all accounts are ascertained and trial balance is prepared. This trial balance, that is also a separate chapter. In rough book, transactions are not recorded in systematic manner. Rough book is not treated as component of book of account. Journal is the original, fundamental and basic और फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट. मीन्स ये जो जर्नल हम प्रिपेयर करेंगे, जर्नल प्रिपेयर करने के बाद ही हमारा रियल अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा. अदर बुक्स आर ऑल्सो टू बी प्रिपेयर्ड इन अकाउंटेंसी, so that all the other books like cash book, subsidiary book, trial balance, all these are prepared on the basis of journal book only, right? Now characteristics of journal book. It is the original book. Why? Because जो रफ बुक में हमने लिखे थे उसको फेयर कर रहे हैं इन द जर्नल बुक, so that is the original book. Very first treatment of accounting transaction is recorded in the journal. The journal is an original or fundamental book. Dual effect. We have to pass dual effect in the journal book. First one is debit and second one is credit. 2 columns for account. We maintain 2 columns for the account, debit column and credit column. Order of the date, we maintain 1 column for the date, and we have to write down date wise only. Order of the date we have to maintain. Then narration we write down after recording debit credit effect. This is not, see, characteristic. This is also a format we can call कि format ही characteristics है. Format आगे आ रहा है. Now what are the significance of journal? Now see, the first one is all accounting transaction. Now in journal we record all accounting
and economic transactions. In that we write down, no, in this we cannot write down non economic transaction. एक तो non economic की तो इफेक्ट भी नहीं आएगी, but we just write down note for that this is the non economic transaction. So in a journal we record all the transaction, that is of purchase, sales, purchase of asset, liability, loan, expenses, incomes, etc. all detailed information. Now journal specifies detailed information of a transaction because we give debit and credit effect, plus after that we record narration also. So we do not have to go for the rough book transaction. We just directly see that journal and we can know that what this transaction actually says. Then information useful for the future. This information, this journal we can utilize for the future also. If you want to get some information, then we just go through the journal and we can get that information. Then easy posting. पोस्टिंग मीन्स ये अपना 9th या 10th नई टेक्स्ट बुक में 10th वाला चैप्टर है लेजर. सो वो लेजर के लिए हमें ये जर्नल चाहिए, बिकॉज जर्नल से हम लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे. वो हम लेजर में ही सीखेंगे किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे. बट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इन द जर्नल 2 separate columns of debit and credit are maintained. Thus it is necessary that it becomes easy that which अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड. राइट, कौन सा डेबिट आएगा कौन सा क्रेडिट आएगा ये लेजर से ही पता चलेगा. लेजर वी हैव टू और वी कैन मेंटेन फ्रॉम द जर्नल ओनली. देन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग. बिफोर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डिंग इन द जर्नल बुक्स एज पर रूल्स. द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन सिस्टमैटिक मैनर इन लेजर. ना जर्नल एंड लेजर दोनों में हम सिस्टमैटिक मैनर से, सिस्टमैटिक मैनर दैट मीन्स फॉलोइंग रूल्स ओनली. रूल्स फॉलो करके हम जो मेंटेन करें अकाउंट्स, दैट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग. द एररलेस अकाउंट्स इन जर्नल एंट्री अकाउंटिंग टू रूल ऑफ डबल एंट्री. 2 effects are to be passed, thus the possibility of accounting errors can be minimized. Accounting errors can be minimized in journal. Why? Because we have to follow rules only, right? Rules follow करेंगे तो errors आने का मतलब chances there are very less. Now see specimen of journal and its explanation. Specimen that means format. अभी अकाउंटेंसी ऐसा चैप्टर है उसमें कि जिसमें हर एक सम में आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट में ही लिखना है ना. आप जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते थे ना, क्वेश्चन लिखा फिर उसका आंसर लिखा, अभी ऐसा नहीं आएगा. हर एक सम में आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, वो फॉर्मेट में ही आपको एंट्रीज लिखनी है. सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग ऑफ अकाउंटेंसी. नाउ सी on before drawing this specimen on the top we write down one heading. हेडिंग भी आएगा आपका, स्पेसिमेन बनाएंगे उसके पहले हेडिंग भी आएगा. ये जो फॉर्मेट होता है उसको हम स्पेसिमेन भी बोलते हैं या फॉर्मेट भी बोलते हैं. द जर्नल बुक ऑफ श्री डैश डैश डैश. जर्नल बुक ऑफ श्री डैश डैश, दैट मीन्स वॉट एवर नेम इज गिवन इन द सम दैट वी हैव टू रिकॉर्ड ओवर हियर. नाउ फर्स्ट कॉलम वी maintain for date, second column for the particulars, then LF number that means ledger folio number, then debit column and credit column, right? Here in the debit and credit column we record amount. Here whatever number is given that we write down. Here we pass debit effect, credit effect, and then after being or narration, कि ये जो शॉर्ट में हमने डेबिट क्रेडिट लिखा है उसका फुल version that is called as narration or being, and here whatever date is given in the transaction that we have to record, right? So this is the specimen of journal. फिर उसके बाद में है ये specification of और explanation of the format, ये हमने देख लिया है, right? उसके बाद ये sum start हो रहा है. तो we start solving sum tomorrow. Today you just read this theory and learn this specimen. This specimen is easy to remember, right? Okay, so see you tomorrow.